Hello. Yeah, you are audible. Please Okay. continue. सर हिंदी में बात करते हैं। Yeah, you can go with Hindi, but please don't call me sir. Okay, you can call me by my name. I'm Shorish. अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। प्रोजेक्ट में टाइटल क्या है? मतलब एक ही प्रोजेक्ट में सब सबमिट करना चाहते हो या डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फिर? डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, हर एक को इंडिविजुअल एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. इट इज एज पर अच्छा। देयर रिक्वायरमेंट, जैसा कि उन लोगों का रिक्वायरमेंट है. हर एक प्रोजेक्ट इंडिविजुअल होगा, अलग होगा. ओके, बट इफ समवन अच्छा। प्रोजेक्ट मीन्स सपोज आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट जो कि काफी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है. हम्म, ठीक है, मान लो कि आपके एक फ्रेंड है हम्म, जो कि इसी कॉलेज में आपके साथ पढ़ते हैं. ठीक है, हम्म, मान लो मैं ही हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कि एक की बस का नहीं है. मीन्स द प्रोजेक्ट इज सच कॉम्प्लेक्स, सच अ बिग प्रोजेक्ट which need more than one manpower. Okay, that time I may include you in my project. ओके, तो तब हम दो 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 जन मिलके गाइड को बता सकते हैं कि सर और मैडम, दिस प्रोजेक्ट इज टू बिग एंड वी आर बोथ डूइंग द प्रोजेक्ट. समझे? तो अच्छा। गाइड अगर परमिशन दे देगा तो तो वो आराम से कर कुछ सकते हो. मतलब वो कुछ देगा, कॉलेज कुछ देगा या हम हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा फिर? कॉलेज कुछ नहीं देगा. ठीक है, हेलो। कॉलेज को देने को क्या है. हेलो, क्या सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ हाँ बोलिए। कॉलेज कुछ हाँ नहीं हाँ देगा, बोलिए। मतलब कि वैसा कुछ है नहीं. हैव यू मतलब मेड वो यू कुछ मेंटर पैसे इन भी व्हिच ग्रुप? आप कौन सी ग्रुप में हो ये बताओ. 89 ग्रुप प्रोजेक्ट, में। अच्छा, उसमें क्या जो गाइड है, मेंटर है, उसके साथ मिले हो आप? मतलब मीटिंग में ज्वाइन किए थे लास्ट वीक? नहीं, लास्ट वीक का लास्ट मीटिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था, फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन किया था। उसमें मेरी लैपटॉप की स्पीकर खराब हुई थी ना, इसलिए मैंने कुछ ही बता ही नहीं सकता। ओके, सही है. तो आपको, आप गाइड से अगर बोलोगे कि सर आप कुछ आइडिया दो, ठीक है, वो आप आपके किसी फ्रेंड को भी बता सकते हो, हम लोगों को भी बता सकते हो. किसी के पास कोई आइडिया है तो उसको डेवलप कर सकते हो, बात वो नहीं है. आप कुछ भी कर सकते हो. दैट शुड बी मीन्स अ स्केल. मतलब एमसीए प्रोजेक्ट लगना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 2-3 लाइन का कोड एक प्रोग्राम जैसा है, वैसा नहीं है. ठीक है, एक एमसीए प्रोजेक्ट वाला एक सिस्टम आपको डेवलप करना है. चाहे वो आप कुछ भी करो, आइडिया कहीं से भी लो. ओके, समझी? अच्छा ठीक है। और कुछ, उर्मिला जी? नहीं नहीं नहीं। तो आपको अगर आइडिया चाहिए, हम लोग ऐसे ग्रुप में बहुत सारा डिस्कस किए हैं पहले भी आइडिया. आई पर्सनली शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट, वेब पोर्टल, जैसा कि एक मैंने एक सिनॉप्सिस भी डाले हुए हैं ग्रुप में, देख लेना. कि कुरियर सिस्टम डेवलप हम्म। करो, एक अच्छा खासा एडमिशन पोर्टल डेवलप करो, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कुछ यूनिक फीचर वाला ऐसा डेवलप करो. तो इस तरह का कुछ करना चाहिए. समझिए? अच्छा। और कुछ? नहीं हेलो. नहीं नहीं। ओके, ठीक है. हेलो. हेलो सुरेश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, कौन है? नवनीत। नवनीत. गुड इवनिंग नवनीत, या बताओ. गुड इवनिंग। या एक्चुअली मैंने एक लाइक यूट्यूब पे ये लेके एक मैंने ये बनाने का सोचता हूँ लाइक ईमेल spam ये message classifier like in that we are able to classify that either the message is spam or not with the help of machine learning and data हम्म sets. सो हम्म. लाइक तो उसमें रियल डाटा तो ये लाइक मैं डाटा सेट कैगल से ले रहा हूँ,
एंड हम्म और कुछ मीन्स जो स्पैम मैसेजेस हैं लाइक मेरे इनबॉक्स के एंड अदर इनबॉक्स के वो ले रहा हूँ। तो इसको मैं हम्म। पब्लिश क्या चीज़ पे करूँ? लाइक मैं अपने ये पे स्ट्रीमलीन पे तो दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर उसको पब्लिश करनी होंगी या एज ओके है लाइक वो वहीं से। अच्छा, एक सेकेंड, पब्लिश का मतलब आप क्या समझते हो कि जो ये जो यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को जो मटेरियल दिया, हाँ, उसको आप बता रहे हो? उसमें जो पब्लिश वर्ड है? नहीं पब्लिश इन द सेंस मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट होती है तो वो लाइव जाती है, राइट? हुँ, अगर वेब हुँ, डेवलपमेंट की है तो हम लोग कोई साइट पे उसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन फिर ये अच्छा, है अच्छा, तो फिर मैं ये कैसे करूँ? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो वाला चीज़ है। तो हाँ, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो क्या? बताओ। कि जो नहीं स्पैम एक्चुअली एज़ डिटेक्शन ऑफ है, नाउ कुछ ना कुछ तो हाँ, एप्लीकेशन वो होगा कि उसमें या तो फिर कोई एपीआई होगा, जिससे स्पैम डिटेक्ट कैसे करे? मतलब डिटेक्ट हाँ, करने के ये बाद उसको एक्चुअली डिस्प्ले तो करना है। एनहांसमेंट है, वो एक्चुअली एपीआई के थ्रू अगर हम लोग ये में लगा दें तो ये एनहांसमेंट प्रोसेस में है। मैं एज़ ऑफ हुँ, नाउ एपीआई नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। एज़ ऑफ नाउ मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर कोई स्पैम मैसेज आती है तो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ इज़िली दैट इट इज़ स्पैम वी डोंट नीड टू क्लिक ऑन दैट। हुँ, सो एज़ ऑफ अच्छा, नाउ मैं पाइथन और स्ट्रीमलीन के थ्रू अपने लैपटॉप पे तो रन करा पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं हुँ। वो सर को क्या देना होगा? सोर्स कोड और व्हाट? हाँ, बता रहे हैं कि आप तो एक प्रोग्राम बनाए, है ना? हाँ, उस प्रोग्राम में आप डेटा का यूज़ किए, ठीक है? हाँ, और फिर एपीआई कॉल के थ्रू आप स्पैम डिटेक्ट कर रहे हो, राइट? हाँ, लाइक हाँ, अभी एज़ ऑफ नाउ मेरे सिस्टम में तो कॉल कर रही है, वर्क भी कर रही है। हुँ, तो हुँ, मुझे वो लाइक मैं क्या दिखाऊँ उनको? ये तो लाइक मेरे सिस्टम में वर्क करेगी, मैं उनको अगर समझाना चाहूँ तो मैं समझा दूँगा, बता दूँगा। लेकिन फिर बराबर, उनको मैं बराबर। क्या दूँ, सर को? एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज़, लेट मी शेयर वन मोर थिंग विथ यू। मैं ना अपना मोबाइल वाला स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप ओके, देखो, वैसे सभी को ही देखो, इज़ इट विज़िबल? या नाउ वी कैन या तो मैंने क्या किया ना, मेरे को कुछ काम है, ईमेल वाला, ये इमेज आइडेंटिफिकेशन में काम करने वाले हैं। हाँ, मैंने ये एंड्रॉयड वाला जो प्रोग्राम लिखे, कोड लिखे, ओके, अभी जस्ट शुरू ही किए हैं। हाँ, तो इसमें मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किए, जस्ट नॉट, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स जस्ट इनिशियल, आई वाज़ जस्ट डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, ओके, ओके, इमेज क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन पे। सो ये है, तो इफ आई कैन select image from my gallery, okay, so it will predict what is this object and I etc. think this one is the petal detection, right? Petal, not petal detection, it's just an object detection, image Okay, classification, only the thing is that, okay. okay, So it is showing that you can see that it is an insect, petal, butterfly, okay. yes, And I also can use a camera, I can use a camera. yes, By using camera I may detect object, right? Just like that, maybe this one, I don't know, camera is, see, room, tableware, etc. It is detecting. So yes. this is something, okay, just wait, I want to stop the sharing. Okay, so what I mean to say कि ये जो मैंने काम किए, ये तो मेरे डेस्कटॉप में ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी मैंने अपना डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखो, दिस इज द कोडिंग, ओके। Yes. लगभग कुछ ऐसा ही है आपके साथ, है ना? आप भी एक हाँ, कोडिंग किए हो, उसमें आप डेस्कटॉप पे तो रन कर रहे हो, अपने मोबाइल पे भी रन कर सकते हो हाँ, या फिर कर सकते हो। तो आपको अगर दिखाना है, गाइड को दिखाना है, तो यही काफ़ी है। लाइक ठीक है, डेस्कटॉप पे आप जो ये करने के सिस्टम, लिए। या लैपटॉप पे, जी सर मैंने यहाँ तक किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसा दिखाना है।
बस और कुछ नहीं है। लेकिन मेरा वाला जो काम है उसको मैं तो गूगल मतलब कि जो मेरा प्ले स्टोर में मेरा एक अकाउंट है, तो उसमें हाँ, मैं पब्लिश करूँगा गूगल प्ले स्टोर में, ठीक है? तो ऐसे ही आपका अगर कुछ एप्लीकेशन है, जो कि आपको किसी भी जगह पे अगर पब्लिश कर सकते हो, ओके, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कि कोई नहीं ऐसा क्या एज़ ऑफ बोले वो नाउ तो कुछ स्टोर नहीं है। है? मैं एक गूगल से लाइक ले रहा हूँ लाइक पब्लिश करके दिखाने का, लेट्स सी क्या होता है। हुँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट एन एपीआई, राइट? तो तो एक्चुअली आई इट विल बी डोंट हैव बेटर। टू मच नॉलेज रिगार्डिंग एपीआई। वो कुछ नहीं है, आप यहाँ तक कर सकते हो तो वो भी हो जाएगा। वरना तो गाइड आपको ये कह सकता है कि आपने क्या काम किया, आपको तो सिर्फ़ आप तो सिर्फ़ डेटा को एपीआई पे भेज दिए। एपीआई जो काम करके आपको रिटर्न कर रहा है, तो इसमें क्या बड़ी-सी बात है? तो ये कह सकते हैं, ठीक है? और हाँ, ख़ास बड़ी करके बात नहीं है। हाँ, लाइक तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा-सा मतलब इसको अगर थोड़ा-सा रैप अप करो, मतलब कि एक कवर दे दो, एक एप्लीकेशन के हिसाब से, कि एक टूल बना दिए कि या कि फिर एक प्रोग्राम ही चलो बना दिए आगे-पीछे जोड़-जाड़ के, या फिर एक एपीआई क्रिएट कर दिए। एपीआई क्रिएट करना इतना कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, इट्स जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ लिंक, नथिंग मोर देन ओके, दैट, ठीक है? तो वो सही रहेगा। वरना if you can convince your guide by any means, so it will be quite okay. But गाइड को अगर मतलब कंप्लीटली खुश करना है तो ऐसा कुछ एपीआई वगैरह कर सकते हो। वरना तो ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो दिखाने के लिए लैपटॉप में काफ़ी है, ठीक है? ओके, So by the way, I will publish my means if I can do that thing as a project, okay, what I actually trying to do, so I will publish it in my Play Store account. तो इसी तरह अगर आपके पास कोई कुछ है, तो you can publish it. If you want to publish if you want to build a web means a mobile application just like Android, you can also use my account means आपको publish करना है, वरना आपको तो खर्चा लगेगा. So you can publish it here also. Okay. ओके। ठीक है भाई, और कुछ? नहीं, यही जानना था लाइक कैसे उनको रिप्रेज़ेंट करें, क्या करें? और कोई ये टेंशन नहीं सिनॉप्सिस है, क्या आप है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ठीक से बनाओगे। पहले तो आप सिनॉप्सिस हाँ, डाल दो, अगर नहीं डाले हो तो सिनॉप्सिस डाल दो। ओके, फिर उस काम में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऐड इधर-उधर का कुछ ऐड करो, कुछ इनिशियल के लॉगिन वाला यूज़र कौन कर रहा है स्पैम डिटेक्शन, उसका नाम, आता-पता उसको स्टोर कर दो, एक डेटाबेस बना के, बस खुश हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ओके। समझे? सर लास्ट डेट कब है? मेरे को सर क्यों बुला रहे हो आप लोग? ये ठीक बात नहीं है। आई एम योर क्लासमेट, ओके? So don't ओके, call me sir. ओके, My name is Soris Datta. You can call me Datta, you can call me Soris, but it looks odd. ओके, ओके, Not सॉरी sounds good सर, to लास्ट me. डेट क्या है, कब है? ये लास्ट डेट तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 18 को। वैसे मैं बोलूँ कि इसका कोई लास्ट डेट है ही नहीं। जब तक आप नहीं दोगे आप उसका लास्ट डेट नहीं बनेगा, क्या 16 ये तारीख हाँ। नहीं दिया सिनॉप्सिस है? कमीशन एक्चुअली का कल ही है? मेरे ख्याल से आपको डाल देना चाहिए कोई भी एक सिनॉप्सिस लेके, फिर उसको आगे लेके आप गाइड के साथ बात करो कि मैडम हमको यही यही करना है, यहाँ तक करना है, इसमें एनहांस करो। आप जो भी डालोगे दे विल टेक इट इन कंसिडरेशन। यू डोंट वरी आप अबाउट इट। सब डाल दिया है, उसमें 16 तारीख लास्ट डेट बताया है, मैंने लिखा है ना? हाँ, तो कोई नो नो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली एलएमएस के अंदर तो ऐसे दिसंबर में दिखा रहा था कि लास्ट डेट दिसंबर के अंदर है। सिंपल लास्ट डेट। अब एलएमएस के बारे में अभी-अभी मैंने तो लेंस मैनेजर मैसेज किए, शायद सबको ही किए होंगे। नो नो तो एक्चुअली बोला एलएमएस पे मैंने ओपन आप करने पे ड्यू ऑन पे दिखा रहा है कि दिसंबर मंथ दिखा रहा है ड्यू। अच्छा वो वाला हाँ।
तो यस वही यस बता रहा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। सिनॉप्सिस इज जस्ट लाइक अ एक प्रपोजल। ओके, और चीज बताओगे, लाइक मेरे एलएमएस में दिख रहा है एआई, लेकिन मैंने लिया था साइबर सिक्योरिटी, तो वो अभी तक लाइक ठीक नहीं मैं हुआ। कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ वो क्या है। लाइक साइबर सिक्योरिटी भी मुझे दिख रहा है, एआई भी दिख रहा है, तो वो कैसे अरे पता हम लोग चलेगा मेरा क्या है? हम लोग बहुत फाइट किए इसके लिए, और हाँ, ये 2 हफ्ता मालूम है पहले मुझे, ये तो लेकिन ठीक हो गया था सबको। नहीं हुआ अगर है वो पता भी। आपको ठीक नहीं हुआ तो क्या ये मतलब क्या है ना, ये इज जस्ट लाइक इट्स बेसिकली हैंडल्ड बाय द सिस्टम ना। तो अगर किसी एक को नहीं हुआ है तो शायद उन लोगों के फिर से कोई बटन बटन दब गया होगा, सबका चेंज हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। जस्ट मिनट, आई नीड नहीं, आल्सो चेक बिकॉज़ मैंने मेल भी की थी, वन जैन 1 2 3 4 5 6 जितने थे सारे पे मिल के, लेकिन नो रिस्पॉन्स। नहीं, अभी तक फिलहाल तो मेरा आर्टिफिशियल, क्योंकि मेरे को तो किसी भी हाल में वो साइबर सिक्योरिटी वाला चीज नहीं लेना है। अभी तक ठीक है, ये मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखा रहा है। ठीक है, आपको क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा हाँ, है? एआई ही दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे को सारे चीज के आते हैं, एआई के भी क्लासेस के आते हैं, साइबर सिक्योरिटी के भी आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, करते रहो, टाइम है तो। ठीक है, और कोई भाई, एनीथिंग एल्स? मेरे को हेलो, हाँ, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हु वेरी इज इट गुड प्लीज? इवनिंग राजीव। आरएस टेक्नोलॉजी, अच्छा राजीव, कैसे हो राजीव काफी भाई? बहुत अच्छा, काफी टाइम बाद हम लोग बात कर रहे हैं अच्छा, इस बार। हाँ हाँ हाँ, अ, बोलो बोलो। और मेरे को थोड़ा सा डाउट था, लास्ट उस दिन मैंने चैट पे भेजा था ना क्या बोलते हैं, हाँ, पीडीएफ बना क्या के भेजा था, मैंने एक बार, एक सेकेंड। राजीव, उसको। राजीव, राजीव, हाँ, कुछ बात हो रहा था ना आपसे। यस 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 हाँ, ये वाला। बताओ। यस, एक बार पीडीएफ ओपन करना प्लीज। हाँ हाँ, श्योर। इसमें थोड़ा बहुत मेरे को एक्चुअली काफी मैंने तो कंफ्यूजन यहाँ थी। पे सबका फोल्डर बना के रखा है, जो जो भेज रहा है। आपका भी है, ये वाला। यस डिजिटल डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करके रखना अपने कंप्यूटर में, क्योंकि मेरा कंप्यूटर तो ऐसे ही बहुत कुछ स्टोर करके रखा है। ये इट अच्छा इज वेरी मच ओके। नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे हाँ, बताओ अपना कंफ्यूजन पहले बताओ, फिर बताओ। नहीं नहीं, एक्चुअली सबसे पहले मेरे को ये टाइटल में बहुत कंफ्यूजन था कि मतलब टाइटल मैं रखूँ क्या। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ थोड़ा सा, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग, हम्म जैसे अनअकैडमी वर्क करता है ना, तो मैं हम्म कुछ इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, मतलब वेब ऐप बनाना चाहता हूँ, जो कि मतलब एक कोई भी उसको ओपन करे तो उसमें 3 लोग यूजर्स होंगे, लाइक एक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इस इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं जो कि एज ए टीचर उसमें पढ़ा क्लास लेंगे, और एक एडमिन हो हम्म सकता है, ठीक है, मतलब 3 टाइप ऑफ यूजर उसको यूज करेंगे, जिसमें कि हम्म बस नॉर्मल से आप कोर्स बना सकते हैं, हम कोर्स बना के फिर उसको स्टूडेंट्स जाके अपना लॉगिन करके अपना अकाउंट्स को बाय कर सकते हैं कोर्स, हम्म फिर उसमें बाय करने के बाद कोर्स डिटेल्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं, ये सारी चीजें मतलब हम उस इस टाइप का एक वेब ऐप बनाना चाहता हूँ, ठीक है, गुड जिसमें गुड। पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। यूजर लॉगिन करके अपना सारी हिस्ट्री देख सकता है, कार्ट देख सकता है कि कौन कौन सा कोर्सेज मैंने कार्ट में ऐड किया, इवन फिर उसको वेरी बाय कर गुड। सकता है, तो एकदम सेम टाइप ऑफ चीजें मैं बनाना चाहता हूँ। बट इसको मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मतलब टाइटल क्या दूं इसका, या फिर इसके लिए ये मतलब कैसे मैं बनाऊं, अच्छा, सिनॉप्सिस कैसे आपका बनाऊं। जो मतलब जो भी आप बनाओगे, मतलब जो ऐप है, ओके, यस, आई वेब होप ऐप, वेब ऐप। द नेम ऑफ द ऐप इज एडू कनेक्ट ना? You यस, are going to एडू कनेक्ट। create a software or a application नो नो, or a सॉफ्ट mobile app. नॉट अ सॉफ्टवेयर, नॉट एप्लीकेशन, वेब ऐप, लाइक Anyway, वेबसाइट, whatever. इट्स अ Website, वेबसाइट it will ओनली। be something, its name will be EduConnect. Okay. So when you are giving EduConnect, so after that, why I am encircle this? This is showing that building an EduTech web. It's नो, not like that. You have to classify EduTech. What is EduTech? EduTech is an web app. Okay. लिसन And मी, rest of the thing, whatever. एक्चुअली एडुटेक इज द Sorry. नेम ऑफ द वेब ऐप, ओके, Hmm. एंड एडटेक, Hmm. एडटेक इज द, आई मीन कि लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना शॉपिंग करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये शॉपिंग वेबसाइट्स है, लाइक ओके। वो समझ रहे हैं हम।
this is platform, दैट्स this व्हाई is आई एम a राइटिंग एज framework. एडटेक, यानी कि इट्स इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लाइक इसलिए मैंने एडटेक वहां पे वर्ड यूज किया। बट मेरा जो मतलब मेन जो आई मीन टाइटल है, मतलब जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसका तो जो मेन नाम मैंने एडू कनेक्ट रखा है। हम्म हम्म। सो ये इसमें ये ये देखो, एक बात बताओ ओके कि मेरा जो टॉपिक है, हम बता रहे हैं आपको, एक सेकेंड। तो इसमें ओनली टाइटल लिखना है या कि उसके बारे में डिफाइन भी करना है कुछ? नहीं, हम बता रहे हैं आपको एकदम। ये वाला ये देखो मेरा वाला, इसमें जो मैंने टाइटल रखा था, है ना, बहुत कुछ लिख दिए थे, इतना कुछ जरूरी नहीं है। एंड आई एम सेइंग द वर्ड्स फ्रॉम माय मेंटर, ओके। जो मेरा वाला गाइड है, एज पर हर डिस्क्रिप्शन एंड as she said that you should mention this much of the thing. जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है ना, यहाँ तक, ये अंडरलाइन मेरा एक्चुअल वर्क है, जो कि डिफाइन करता है मेरे वर्क को। अभी ये जो राजीव भाई ने दिखा है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ यस पे ऐसा होना चाहिए, एडू कनेक्ट डैश और कोलन, ओके जैसे कि एंड एजुकेशनल वेब प्लेटफॉर्म interact with learners and education providers, just like that. It's just like a educonnect hyphen the caption for your website. You got it? You got it? जैसे कि Amazon, okay, worldwide famous e-commerce website where you can buy your dream product, just like that. Title will be something like that. समझे? अभी आप एडटेक मॉन्स्टैक से बना रहे हो, वो आप मेथोडोलॉजी में डालो ना। ये जो मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे डालने का है वो, समझे रजीब भाई? हेलो। हेलो। यस हाँ यस जी। सॉरी 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 यस यस ऑडिबल। तो टाइटल में सिर्फ हमको एक ही चीज बताना है, जो कि आपका किताब का टाइटल होगा, उसमें ओके आप बाकी और कुछ मत डालो। जैसा मैंने बताया ना कि Amazon वर्ल्ड फेमस e-commerce web portal where you can buy your dream product, so यस that will become a caption, just like that. Edu connect, and what is it in a few words, describe that thing in a few words. The web portal where learners and education provider interact, और हैप्पी लर्निंग, ऐसा कुछ एक कैप्शन बना के दे दो, वही टाइटल होगा, ओके समझे? ओके अब उसको तुम एडटेक में कर रहे हो, मॉन्स्टैक में कर रहे हो, दैट यू शुड पुट अंडर मेथोडोलॉजी, ओके। ओके दिस पार्ट इज फॉर दैट, समझे यस क्या? यस गॉट इट। एनीथिंग एल्स? और ये सब जो मैंने लिखा है, वो किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखे हो, है ना, यस जो ये वाला शायद, टू टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एडटेक। effectiveness of an edtech full stack, एक्चुअली तो आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, यू आर यस नॉट गोइंग टू असेस द effect of edtech ना, यस यस you are एग्जैक्टली using the edtech platform and Monstack to build your application. यस तो आपको एग्जैक्टली ये सब लिखना भारी पड़ सकता है, समझे? माने एग्जैक्टली बट मतलब गाइड कंफ्यूज हो जाएगा, आप करना क्या चाहते हो, edtech का इफेक्टिवनेस आप ढूंढना चाह रहे हो, या फिर आप बिल्डिंग करना चाह रहे हो? मैंने ओके तो पकड़ लिया, यस क्योंकि यस I know you very well, okay, so and you are going to develop an application, I am so, we are not going to analyze the working process of MARN and EdTech and anything, we are just using that ना। यस यस एग्जैक्टली। तो आप उसको सिंपल करो, सिंपल करके डाल दो। अब सबमिट कर दिए क्या सिनॉप्सिस? नो 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 नॉट नाउ। मैं आज तो की मीटिंग का वेट कर रहा उसको, था, आज मीटिंग हो तो आज मैं मीटिंग के बाद इसको एडिट करके फिर हाँ फाइनल ठीक है, सबमिट कोई बात करूंगा। नहीं, तुम, हाँ, कल सबमिट कर दो, और ये जो वीकेंड में जो हमारे मेंटर मीटिंग है, उससे पहले इसको सबमिट करो, ताकि आप यस यस मेंटर मीटिंग में उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि आप एग्जैक्टली काफी लंबा काम ले लिए हो।
तो इसको यस करने के यस लिए टाइम भी तो लगेगा ना। मुझे भी एग्जैक्टली। यही लग रहा था, लाइक ये हाँ, फुल्ली एज ए एलएमएस टाइप है, ये एलएमएस नॉट फुल्ली एज टाइप है, नहीं एलएमएस नहीं एक्चुअली। बेसिकली दे ही इज डूइंग समथिंग लाइक मींस कनेक्टिंग द पीपल। यस एग्जैक्टली। ओके, वो जो आपने बताया जो लोग करते हैं अन अकेडमी और बाकी जितने सारे, जैसे ये यूडमे लाइक। अपग्रेड भी ऐसा ही है, ग्रेट लर्निंग भी ऐसा ही है। दे आर कनेक्टिंग द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन प्रोवाइडर, है ना। Actually, I have already in last, I mean in last year, I have already build a website like short time services. Like जैसे हम लोग अच्छा। कोई भी घर पे कोई जैसे कि OLX जैसे काम करता है ना, किसी भी सामान को हम लोग सेल हम्म। करते हैं, तो कुछ इसी हम्म। कॉन्सेप्ट पे मैंने पिछले लास्ट ईयर मैंने एक वेब ऐप बनाया था। मतलब वेरी जिसमें गुड। कि कुछ ऐसा था कि मतलब कोई भी पर्सन जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है या फिर एसी मैकेनिक है या फिर कोई बार्बर है, लाइक इस टाइप के जितने अच्छा, भी वो अर्बन पर्सन, कंपनी, जितने अर्बन कंपनी। जितने भी पर्सन्स हो वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और फिर उनके जो भी मतलब कस्टमर्स हो, लाइक मान लीजिए मुझे अगर कोई अचानक से इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम आया, तो मैं वहां से हायर मतलब फाइंड करके जो भी हमारे नियरेस्ट होगा इलेक्ट्रिशियन है फिर जो भी, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली या मैसेज करके हम तुरंत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि आप मेरे यहाँ इस टाइप की कुछ कनेक्ट करने के लिए। मैंने बनाया था लास्ट अर्बन ईयर। कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, यस। बहुत अच्छा है। ये देखो तो मैंने कुछ ऐसे भी किए थे, ये जो ऐप है ना, ओके। ये जो ऐप है ये मैंने लॉकडाउन के टाइम में किए थे, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था कोविड के यस यस। टाइम में। ओके, उसमें क्या हुआ था ना कि सारे मोहल्ले तो बंद थे, तो शॉप, हाँ शॉप्स भी बंद थे। तो मैंने क्या किए थे, वो जस्ट मैंने जैसे बैठे थे तो फॉर सोशल एक्टिविटी के लिए मैंने ऐसा बनाया था कि जितने सारे लोकल शॉप है उसके साथ कस्टमर्स को मिला देना है। तो यस कस्टमर्स इस ऐप के थ्रू घर में बैठ के तो लोकल शॉप्स को ऑर्डर भेज सकते थे, क्योंकि उस वक़्त पाबंदी था बाहर निकलने का। तो एग्जैक्टली। ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज़ वर्क वेरी इफेक्टिवली। लेटर तो ये बाकी जैसे जैसे आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो ना, यस उसमें यस। लंबा क्यू लग जाते, तो उस वक़्त तो ये सब अलाउड नहीं था। तो दैट टाइम इट वर्क्स फाइन। बट एज़ यू नो दैट वी ऑल लाइक टू मूव टू द ग्रोसरी शॉप्स। ओके, तो बाद में ये उतना ज़्यादा अभी काम पे नहीं है, पर ऐसा ही कुछ बनाए थे उस समय, यस यस। कम्युनिकेशन। ये एकदम से इट इज़ सेम यही जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट है। कम्युनिकेशन ऐप। मैंने भी जो बनाया था सेम हुँ, कॉन्सेप्ट यही है। बट एक्चुअली इसमें जो हुँ, ग्रोसरी वगैरह को ऐड करते थे उसमें इलेक्ट्रिशियंस या फिर जो भी मैकेनिक्स हैं और उसको कस्टमर से हुँ। अटैच करते, वर्किंग सेम था, आई मीन कॉन्सेप्ट एकदम सेम यही था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसको इसीलिए फटाफट उसको सबमिट कर दो और गाइड से परमिशन लेके शुरू करो। ये बहुत अच्छा चीज़ बनने जा रहा है, ठीक है? ओके। वेरी गुड। ओके थैंक यू। और करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर हेल्प चाहिए तो मेरे को बोलना। आई हैव अ डेफिनेटली। क्वाइट गुड एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट, डोंट वरी। ओके, वही चीज़ आते हैं मुझे और कुछ नहीं। चलो, और कोई कुछ बताएगा? मतलब इज़ देयर एनीथिंग एल्स? प्लीज़ एनीवन? I have a doubt. Like, what we need to write in the limitation part? Yeah, please your name please, friend. Ajo, Ajo. Okay. Where do you from? I'm from Kerala. Yeah. Nice place. It's very famous due to the Yes. movie. Yeah. Yeah. So what's your question? So in the synopsis, there is a area, right? Like, it's called limitation. Just like this. Uh, yes. Just wait. So I will create the just a minute. This one. Limitation. This one. Ah, this is the limitation. Yes. so Tell me. like, what do we need to like mention it there? Like, what is this? Like, is that we need to mention the scope of the project or? No, what is beyond the scope of the project that you need to mention here. Your scope of the project you will define here, objective of research. Okay, Mhm. maybe yes, this is the place where you have to define the scope of your project. What is the objective of your work? Okay. 2, 3, 4 points you may Mhm. give. Okay,
and in the limitation section you have to mention what is beyond your scope, means जो कि आप करना चाहते हो, मतलब कि what you want to add more, but due to some other constraint you are not able to doing it right at Oh, this time. okay, Got it? okay. जैसे कि like that I demonstrate here, this is a on track. राजीव भाई हो क्या? Hello Rajiv. Yes, yes, yes. Yeah, see here also that this is a courier service provider Mm-hmm. application. Okay, for I was taking, I was giving you a demo how to write the synopsis. Okay, So in that I gave it a name like that, on track. And what is it? Online courier service management system. Rajiv, you okay. understand? Yes, yes, Title exactly. will be something like that. Okay. So in this system, okay, why I build this system? Okay, why I will work on this system? These are the problems. These are the problems. Okay, that's why I am building this system, right? Okay. Now these are the objective that I will implement, means I will try to implement in my project. Okay, and see Okay. here, this is the thing that I will not implement in my project. That's why my project will be limited to some extent now. And Mm-hmm. what I mentioned here, in my system I will not consider this offline sync mode and the payment gateway. I think I payment gateway, online payment gateway, that I am not going to implement in this current project scope. And that will become my limitation for this project. You got it, Ajay? Yeah, got it, got it. Yeah. What is the meaning of this offline sync mode? Offline sync mode means uh, this of my system will be enabled whenever you have the internet only. Now, what happens if the internet is not available, or you have some power cut or some major issue? That time you will not be accept the consignment from your client, na? Yeah, correct. So that is not a very good perspective from business perspective, right? Yes, So correct, for correct. that purpose, offline SIG mode is a very important thing. Means you can even collect the consignment from the customer if your system is not in online mode. Okay, when later when the power established or the online mode established, then there will be a sync process. Automatically, system will be synced to the server. So Mm. that I will not do in this project. So that will become my automatically limitation. Na? Yeah, correct. Have you got it? Yeah, got it, got it. Okay, okay. Anything else? Nothing. Yeah, that's all. Okay, thank you. Thank you. Anyone else? Anyone else, please unmute and speak. Maybe nothing. Okay. So we are not doing any classes here. Sorry, it's Every joking time you only. should interact. Every time you interact, even with the mentor, even in our live classes, interaction will give them the feeling of the presence. Maybe. Yes, exactly. Yeah, our mentor was in last meeting, in project meeting. Our mentor was just crying. Why nobody is Asking any question, like, asking any question or reply, giving reply? So that time I told her, okay, maybe my friends are mm, taking too much pressure on this project. guide So instructor are do thinking not. like I'm Actually, sitting what alone in the happened class. last, there are a lot of confusion in this project. What we do, Mm, what yeah. So, guys, Gi- please don't take it too much as a headache. It is very simple task. You have to do also a simple task. Okay, just submit it and try to manage or collect the thing and prepare the report and for Viva. Okay, just like Suresh, that. this is Yeah. Vikram. Actually, I have couple of questions. This PHP, whatever the template they shared, so we have to go by that only. Like we have to
stick with the PHP, MySQL, JavaScript, and Bootstrap, all those technologies, or we have our own choices, and we can build the project based on different technologies. Uh, First of all, tell me, do you have any experience or knowledge in some other technology or anything else? Yeah, we do. I do Do you have have any? like Yeah. I work with Java and Python. But what I'm thinking, since this is something new, and since everybody is learning, this is opportunity to explore something new. Though there are 8 weeks, we have to deliver every week, but this is just Mm. another opportunity wherein to get our hands dirty with the new technology. For Uh, example, Sorry uh, to say. Yeah, just 1 minute. I will suggest you not to go for the new one. uh-huh, Okay, if PHP and everything is new to you, do not go for it. Okay, hmm, and I can assure you that if you do the project in Java or in Python than PHP, you will get more credit. You got it? okay, So no, okay, nobody prescribed that you have to do the project in PHP, and they did not give any template. What you said earlier. Okay, they did not mention anything. You can do anything as a hmm. project. And these Okay. submission dates are like we have to follow this submission date. Like for example, on 18th we have to submit the synopsis. So Hmm. and since if at all like I'm trying something new, and I'm sure like I will deliver. But problem here is like we have to we have to deliver every week, or we have to deliver at the end of the 8 weeks. Let's say in Okay. another 2 months, Yeah, like. yeah, I understand. Now see, Jain University appointed how much? 40, I think. Na? We have batches project, Mhm. maybe 40. 40 distinguished people, okay, from the industry, and given 30 students each of them. And it's sole responsibility given to that mentors. Whatever mentor will think, whatever mentor will want, they will do. They will take action with for you. Okay, so what I mean to say, it is totally depend on your mentor what she or he will like. Okay, if the mentor will say that you have to submit each and every weekend a report to me, okay, how far you develop, what are the things that you did, then you have to follow in that way. But I personally But think that is not going to be happen. Okay, you Okay. can do your project in your own pace, and Mhm. what I can suggest you, just you have to attend the meeting, and you have to speak to her or him that I have done this much, okay, and I will do that thing. Just be present there and tell them that you are on the work, just like that. It is Okay. not And hard just and fast के आपको each and every week आपको कुछ करके ही दिखाना है. It's not like that. Means development in this type of project not going in that way. Okay. okay. But Yeah. Tell me. what project guidelines says? Like we have to deliver every week, or it is fine to deliver end of 8 weeks. The complete scene you have to deliver after 8 weeks through a project report. Okay. Mm-hmm. The complete thing. Okay. But And you if have to report to your guide every week uh-huh. how far you are in your project. You got it? Okay, I see. I see. Okay. If you can convince him, if you can convince your guide by verbally or by showing something, then Mm-hmm. it completely depends on you. Okay, you have to convince them somehow by any And means. from guide, like whoever he or she.
Like Hmm. from technology perspective, how much guidance I can expect? Let's say, suppose I stuck with something, and if I ask them, uh, shall I expect they will get the solution for me, or like Very uh, good question. Okay, very good question. But unfortunately, please don't mind. You should not expect a very good amount of help from them. Okay. mhm. In fact, in Okay, some cases, it will be zero. Okay. okay, So why this is? Because hmm, each and individual. Okay. Suppose in my group, my mentor is from data science okay, background. Okay. But in my group, I have selected, and many of my mates have selected web based. So if we ask her, okay, ma'am, what is the procedure or what is the command of connecting the database to PHP? Maybe she did not bother about answering that thing, or maybe she is not doing in that part. Okay, so how can she give the answer? hmm, So you can depend on your guide for the flow of your project, what to do, okay, how far you did, and some conceptual guidance you will get from her. That is for sure. But you cannot expect some syntactical guideline. Yeah, it is not possible for all those people to know everything. Na? एक एक okay, गाइड के अंदर मतलब each individual guide are taking the students, some of them are doing web based, some of them are doing pythons, they are doing, few people are doing in java, few people are doing in cyber security. So it is not possible for the guide to give syntactical guidance to you for each of them. Okay, maybe your guide, if your guide is from that particular background on which you are developing your project, then maybe you can get syntactical help from her. Otherwise, you will not going to get. okay. So you mean to say, unless we connect with the person and like understand the depth of the technology, his understanding about the technology, based on Hmm. that, like we can expect. That's what you. You can expect a little bit, but not a very great extent. You are going to get help. Okay. And Suresh, one thing, if someone wants to make and not able to make a project, then what's happened on that time? Sorry, I am not getting you. Please. Actually, if someone commit that I will make this project and not able to finish or not able to complete that project on that till the end date, Hmm. That is so what uh, happened? that is an Roasted important it, thing. That's why I always roasted tell it. choice in that way which you can complete. Okay, means it's our dream, or everybody's dream, that we will do a very good job in our MCA project. But try to be realistic. Whatever you can do within your limitation, knowledge limitation, and time limitation. Most of us are working. Okay, so you have to. Yeah. We cannot. We will not be able to deliver 100% time behind our project. Okay, so try to plan in that way. Whatever you can complete within these 8 weeks or 8 weeks. So abhi hai bhi nahi, shayad 7 weeks left. Okay, so you have to scale it in that way so that you can complete the work. That is good for your CV. Okay, that is good for your future means purpose. But as per your viva and presentation, the thing is that you have to convince you have to convince the guide. Okay, if the guide is seeing that you are presenting in every meeting and you are reporting, and still you are not able to complete the thing in within that time limit, there may be some reasons. Okay, so she will consider you, there will be no problem. Okay, so regular communication is very much important, is going to be very much important. एंड Yeah, yeah. लाइक आप लोगों की कितनी सेशंस है? हम लोगों के मैं अपना देख पा रहा हूँ तो ओनली 3 सेशंस है एज ऑफ नाउ, जिसमें एक हो चुकी है एंड दो दो बाकी हैं। कहाँ पे?
फॉर प्रोजेक्ट गाइडलाइन सेशंस में। प्रोजेक्ट गाइडलाइन ऐसा है क्या? मैंने तो देखा भी नहीं। मेरे में तो 3 ही दिख रही है, आप लोग अपना देखोगे। कहाँ पे दिखेंगे बताओ? यहाँ पे कैलेंडर में एलएमएस जाके। में जाए क्या? एलएमएस में? हाँ, हाँ, एलएमएस हाँ, में जाऊँ या फिर कहाँ पे? एलएमएस में। अच्छा, एलएमएस में हम गए। एक सेकेंड। वो लोग क्या एलएमएस में एवरी वीक का डिस्कशन अपलोड करते हैं क्या लोग? वो कैलेंडर पे जाओ आप, ऊपर टॉप अप आपके जो वो बेल है ना, उसकी राइट साइड, या फुल यहाँ पे? कैलेंडर। हाँ, राइट। अच्छा, एंड वो देखो लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कितनी ये है क्लासेस, जो कहाँ पे है? जो कि लास्ट राइट साइड एवरी सैटरडे को होगी मे बी। अच्छा, ये वाला? हाँ, उसके नीचे। हाँ, वो जो सेशंस है, वो कितने सेशंस हैं? अच्छा, ये तो चलेगा अभी। दिस इज पर वीक का, इस मंथ का ये कैलेंडर है। तो इस मंथ में हर वीक में सैटरडे संडे में आपका सेशन चलेगा प्रोजेक्ट का, है ना? सैटरडे संडे भी आप लोगों का है? नहीं नहीं नहीं, हर एक का तो एक ही दिन होगा। जैसा कि मेरा सैटरडे है। आई हैव सैटरडे। ओके, ओके, तो एंड जैसा अगले जैसा मंथ में मेरा है लाइक। सैटरडे है इसीलिए मेरे सैटरडे में आ रहा है ना। हाँ, एंड जुलाई में भी है। जुलाई आप में ये भी होगा। देखो, मैं तो नहीं देख पा अच्छा, रहा हूँ यहाँ से मेरे में। यहाँ से जुलाई में ना ना। नहीं है। Sorry, हाँ जी। if someone, because of work restriction is not able to join on Saturday, will they, whether they are uploading the discussion in LLM? सी, वो डिस्कशन सुन के आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यू विल नॉट गेट एनीथिंग बाय जस्ट बाय लिसनिंग द डिस्कशन। ओके, आप अगर जो डिस्कशन जो मीटिंग चलेगा उसमें आपका टाइम, आप अगर 5 मिनट ज्वाइन करके आपको गाइड के साथ बातचीत करके यू हैव टू, यू कैन गो आउट ऑफ द मीटिंग। यू गॉट Yeah, इट? that actually. Mhm. Okay, so you do not need to listen the discussion for others. You have to Correct. tell your facts to your guide, and Mm. from guide you can get your next assignment or whatever she say. After that you leave the meeting. No need to be hang on the meeting till Okay. then. Yeah. Yes. Only 5 minutes presence. Correct. अगर ये Yeah. करोगे तभी जाके कोई भी किसी भी कारण से अगर मान लो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए तो वो मान सकते हैं, वरना तो अगर कोई बंदा लास्ट में जाके बोले कि नहीं Mhm. हुआ तब तो खराब हो जाएगा ना। Correct. क्या होगा, वो Correct. मार्क्स कम देगा, फेल तो नहीं कराएगा। तो मे बी Uh-huh. शी इज गिविंग 50% 60% मार्क्स। No, but as you know, like us are working, but and some of us have, like say, because of some extended work hours, if I am not able to join on, so how I cover it up? Like, um, ये तो आपको what you have to do, at least you have to join once in your group, and you have to tell this thing to your mentor, okay, how I communicate. That time she may advise you that you then if you are not able to, then you can mail me, message me, WhatsApp ग्रुप में आप मैसेज करो, कम्युनिकेट करो, ऐसा करो, समझे? तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या इसका? है क्या? आप ग्रुप में नहीं हो शायद, इसलिए पता नहीं है। Oh, बहुत सारा ग्रुप है। okay. Approx more than 31. हम्म, हर एक का ना 30 पीपल आर देयर इन अ ग्रुप। एंड एंड वो भी है लाइक उस ग्रुप में होते कुछ नहीं है। नहीं, उस ग्रुप में अभी तक हुआ तो होना तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी होगा हाँ, क्या ना। वही होता बोल रहा हूँ मैं। है, कैसा है ना कि मेंटर्स लोग ज्वाइन करेंगे उसमें, नहीं तब नहीं जाके ना कॉन्वर्सेशन चालू होगा। नहीं 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 हाँ करेक्ट, तो वही मैं बोलने वाला था कि ग्रुप में होता क्या है क्या नहीं होता है,
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रुप के साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है ना। इंपॉर्टेंट है। जब मेंटर्स लोग ज्वाइन करेंगे, इस वीक से ज्वाइन करने वाले हैं सारे, हाँ तो तब जाके यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ हर। एंड इन एलएमएस यू हैव आल्सो this part. Probably you do not have noticed this thing. Miss, even I found it find it 2-3 days back. See here, this is my project folder, and here you will have, okay, I have submitted on the very first day. This is my submission. Here you will get, see here, teachers, teachers. See here, and here you can directly mail to her, mail to your mentor. यहाँ से ओके। समझे? सो मतलब सिनॉप्सिस इज बेसिकली इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक क्या कर रहे हो। ब्लूप्रिंट तो नहीं कह सकते, ब्लूप्रिंट में सब कुछ रहता है। Synopsis is basically a proposal. What Okay. you are going to do in a nutshell, you have to show it to your mentor. Okay, but things can change, right? Like if at all some like 100% things will change. Lots of uh, things will happen during the development phase. Huh? correct. That's what I was about to say. You know, like yeah, no sorry. Thank you so much. Thank you, This thank you. Welcome. these sessions will really help us. You know, everyone. Thank you so much. Thank you. Welcome, welcome. Mhm. Anyone else? Anything to say? I don't know. Hello. Hello, Suresh. I think हाँ, नवनीत। now over करना चाहिए। हाँ जी। I think सभी का क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके ओके ओके, तब तो सही है। अच्छा, it's 9:30 almost. Okay, thank you. If anything else, if anybody else to not submitted, please submit the synopsis by this week. And if any confusion is there, then always you can communicate with us in the group, respective group. Okay, thank you, friend. Chalo. Thank you, Good night to Suresh. all. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Night all. Good night.